ओके प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पे। देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग गिवन है, देन आइसोमेट्रिक एंड ये इसका टॉप व्यू और इसका सेक्शन व्यू। जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे सेक्शन से, तो जो कर्व्स आपको जो सेक्शन व्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसमें होल्स है, थ्रू आउट दी होल है और 10 डायमीटर एंड देन ये इसका साइड व्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसे बनाना स्टार्ट करेंगे इसका टॉप व्यू से। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कल ड्रॉ करना है वो यहाँ पे 54 एंड 42 डायमीटर के दो सर्कल यहाँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेता हूँ स्केच एंड देन फ्रंट प्लेन। ओके, और यहाँ से लेते हैं व्हाइट प्लेन। ठीक, नेक्स्ट टेक सर्कल एंड स्पेसिफाई द डायमीटर। टेक स्मॉल डायमेंशन 54 diameter. Okay, then again 42 diameter. Okay, now then again देखिए यहाँ पे 16 एंड यहाँ जो हाइट है इसकी सेंटर से 47 सिंपल। मैं यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड टेक स्मॉल डायमेंशंस एंड स्पेसिफाई द डिस्टेंस 16. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम सेंटर टू डिस्टेंस यहाँ पे लीजिए आप 47. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 47. Take smart dimensions from here to center, specify 47. Okay, now select the center point and the center point, hold the control key and make vertical. Okay, now sketch is fully defined. Then again यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे 24 एंड 15 डायमीटर के दो सर्कल है, इनको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 100 डिस्टेंस पे सेंटर से इसका लेता हूँ। ओके, take smart dimensions and 24 and 15. ठीक है, now simply specify the distance from here 100. ठीक है, select the center point and the center point make relation horizontal. Now sketch is fully defined. Take slot and draw here. Okay, now take smart dimension and specify the radius. यहाँ पे देखिए इसकी जो रेडियस गिवन है वो 5 है। स्पेसिफाई द रेडियस 5 एंड सेंटर डिस्टेंस इज 36. ओके, कि यहाँ ये गिवन है 36 है फ्रॉम सेंटर, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका 25 एंड ये डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे इसको 25. ठीक है, नेक्स्ट देन अगेन देखिए यहाँ पे दो लाइन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन लेंगे हम यहाँ, इसको यहाँ पे सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अनदर एक लाइन लेंगे, उसे भी यहाँ ड्रॉ करेंगे। सेलेक्ट द लाइन और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। देखिए रिलेशन इस एंड सेलेक्ट द लाइन और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है। ओके, देन अगेन सेलेक्ट द लाइन एंड होल्ड द कंट्रोल की एट द लाइन और मेक इक्वल. ओके, नाउ टेक a smart dimension, specify the distance from center which is 9. Okay, this is 9 now. Okay, and take line or from quadrant to draw this and then select, and again take line from quadrant to this and now specify the distance from quadrant to this point is 50. Okay, and select the point and the point make vertical now. Okay, ठीक है, and again यहाँ पे इतना हमने ड्रॉ कर दिया इसको। and again देखिए यहाँ पे इस पोर्शन को यहाँ ड्रॉ करेंगे जो कि 36.15 यहाँ रेडियस है। इजी भी है, इसको ड्रॉ करेंगे एंड टेक यहाँ पे 3 point arc. Okay, and from here and this, और हमें यहाँ टेंजेंट करना है इस पर। चलिए मैं दोबारा ले लेता हूँ इसको। नेक्स्ट, ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे देन अगेन हम 3 पॉइंट आर्क लेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क from this to this and select it. Now select it. Okay, now select the arc and the line or make tangent, and again select the line and the arc, make tangent. Okay, now and again select the arc and the circle and make tangent. So now here you no need to define the radius. Okay, or you can also define it, but it is only 36.15. okay, and again force it. Select the line and the arc, make tangent, and select the line and they make the select the arc and tangent. Okay, now select the circle and the arc or make tangent. Okay, so now sketch is fully defined and यहाँ भी हमें आर्क ड्रॉ करनी है जो कि 30 की है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, and again take 3 point arc and from here to here and define it, and again और इसमें select it. यहाँ ड्रॉ नहीं होगी, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए. ठीक है, and again देखिए यहाँ पे इसमें राइट. ओके, नाउ देन स्पेसिफाई द रेडियस जो कि है हमारे पास 30. ठीक है, एंड यहाँ भी मुझे रेडियस स्पेसिफाई करनी है इसकी. ओके, 30 रेडियस यहाँ देनी है. एंड ओके, नाउ सेलेक्ट द आर्क एंड द सर्कल, मेक यहाँ पे टेंजेंट, एंड सेलेक्ट द लाइन एंड द आर्क एंड मेक टेंजेंट, एंड अगेन select the line and the arc, make tangent, and now select the circle and the arc or add the tangent relation. Okay, तो यहाँ पे देखिए then again take power trim and trim from here. Okay, यहाँ से इसे trim करेंगे अभी. Next, okay, then again इस पोर्शन को ट्रिम कर दिया. देन अगेन इस लाइन को यहाँ से ट्रिम करेंगे. नेक्स्ट, यहाँ भी ट्रिम करना है. देन अगेन इस सर्कल को भी यहाँ पे ट्रिम करना है. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी हमें ये भी ट्रिम करना है. ओके, स्केच अनडिफाइंड हो गया, बट कुछ नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे पॉइंट पर क्लिक करना है एंड मेक टेंजेंट. ओके, नाउ देन अगेन सेलेक्ट द पॉइंट एंड मेक टेंजेंट. ठीक है, देन यहाँ पे देखिए इसका जो डायमीटर है वो शो नहीं हो रहा, तो उसको ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, मैं इसको ऐसे डायमीटर शो करूंगा यहाँ पे. ठीक, नेक्स्ट fully defined. Now select the okay, select the point and select the point and make tangent, and the point make tangent. Okay, now sketch is fully defined and select the point and make tangent. Okay, now select the point and make tangent. ठीक है, एंड देन फ्रॉम हियर अभी क्या करना है, इसकी हमें रेडियस डिफाइन करनी है. देखिए जो कि विच इज 36.15. देन मेक ऐड अनदर रिलेशन, सेलेक्ट द आर्क एंड मेक इक्वल. ओके, नाउ स्केच इज फुली डिफाइंड एंड राइट क्लिक एक्सट्रूडेड बॉस बेस. ओके, राइट क्लिक एंड एक्सट्रूडेड बॉस बेस. ठीक है, right click and extruded boss face. Okay, now blind and देना है यहाँ पे 20. ठीक है, 20. now आई होप कि क्लियर हुआ हो ये. ठीक है, देन अगेन देखिए यहाँ पे उसके बाद इसमें जो पोर्शन यहाँ जो गिवन है इसमें 10 का हमें क्या किया है, होल्स है यहाँ पे 10 का जो कि थ्रू आउट है. एंड देन सेलेक्ट द सरफेस एंड ओके, नाउ then take circle and
diameter, specify the diameter 10. ठीक, now from here to here define the dimension 10. ठीक है, next select the center point and the center and make vertical. Now sketch is fully defined. Right click, extruded boss base, and from feature to extruded cut and up to surface. Now select the next surface. Okay, simple. Okay, I hope clear हुआ होगा आपको. Then again file and save the model. Okay, then again file and make drawing from part and browse select your standard sheet. तो प्रोजेक्शन व्यू में यहाँ लेता हूँ इसमें set it with edge. ओके, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक इसको यहाँ रखिए. देन अगेन इसमें डायमेंशंस लगाएंगे, एनोटेशन, मॉडल आइटम, एंड देन सेलेक्ट द एंटायर मॉडल एंड इंपोर्ट आइटम इनटू ऑल व्यूज एंड सेलेक्ट ऑल. ओके, देन एनोटेशन जो भी आपको चाहिए होगा यहाँ पे आ जाएंगे. देन यहाँ देखिए डायमेंशंस जो है शो हो गई हैं, लगभग सभी डायमेंशंस यहाँ पे आ गई हैं. ठीक है, सेट करेंगे. देन 60 यहाँ पे देखिए ये है 10 एंड देन ये 20. ओके, देन अगेन सेक्शन व्यू इसका शो कर लेते हैं, सेक्शन, एंड देन यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट से इसका सेक्शन व्यू शो करूँगा. देन ओके, और यहाँ पे शो कर लेते हैं. ठीक है, सो सेलेक्ट इट एंड आई होप क्लियर हुआ हो. देन फाइल एंड देन सेव एज पीडीएफ. तो यहाँ पे पीडीएफ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेव एज टाइप में अडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ, सेव इट. ये पीडीएफ जनरेट कर देगा एंड देन प्रिंट इट. सो आई होप कि क्लियर हुआ हो. इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें. थैंक यू.